discussion would be a generic one, but again, we'll touch upon. I recently saw a report shared by NDTV Profit, wherein they talked about the sector wise FII inflow and outflow of data. So that we will be discussing that. And apart from that, if anybody from the listeners have any views or maybe any questions, will be whether the voice thing is proper or not, because I saw there were some blurred profiles, maybe some network issue. So, guys, in the want of time, let's start, and people will keep on joining, and we can continue with the conversation. So, basically, it was talking the article which I was telling you guys. It was talking about the sectors which FPIs bought and sold in the first half of January. So basically, oil, gas, and consumable fuels, power, financial, and consumer services are the sectors which recorded the biggest foreign inflows in the first half of January. And there are sectors of the likes of automobiles and auto components, media, fast moving consumer goods, IT, and capital goods, which witnessed outflows in the aforesaid the period. Yeah, I see. Ravi also joined. Did he drop anyways? So this is the data which is being provided by the National Securities Depository, and what we can, I mean, gauge from this is like we can, I mean, it's always the sector rotation is a phenomena which keeps off happening in the market. So smart investor move their money from these sectors which they think are overvalued, or maybe they have some better opportunities at hand, so they move their money. Obviously this doesn't mean if you are invested in these sectors from lower levels and have some visibility of growth and those individual companies doing good going forward. So by no means it is advisable for you guys to like uh, sell those investment and look for other opportunities. So you should only be selling your opportunities when the initial thesis go wrong, or the targets which you had in your mind are achieved before time, or there is too much of euphoria, optimism, and outstretched valuation in that particular company. Then you can always think of selling, but you never know how far the things can stretch in these bull phases of market. The live examples are the railway companies which have become 5, 6x or maybe 10x in a very short span of time. But again, the question which we all should be asking ourselves is this sustainable, right? Because nobody wants to leave behind in these kind of rallies. But the bigger question is when the mood of the Mr. Market changes. So would you be in a position to sell those companies, or you have a horizon that you'll come what may, you'll be sticking to your investments? So obviously, like if we see the sectors of the likes of automobile and auto components, they had done well in last 6 months or maybe some more period. But two sectors which has shown negative inflows are media, entertainment and publication, and IT technologies. So I mean, to my limited understanding, I fail to understand like the media has been talked about a lot in line with the upcoming election, because especially the print media and all, because in the election here on election time, you can expect a lot of advertisement from different political parties. So definitely this sector has been the talk of the town. But again, why the although like the amount of money invested by the FIIs is always I mean considered, and we should give it a thought. But again, the amount of domestic inflows we are getting these days has outpaced the level of what we say
the attention which FIIs used to have in the past. And again, IT sector also, like, they had negative inflows. Although it's a very short period, 15 days doesn't decide the bigger trend, but this is what. And as everybody was talking about few sectors of the likes of power and oil, gas, and consumables. So those sectors have got very good inflow from the FIIs, and definitely oil and gas is one sector which we had also discussed in the past. Obviously, my understanding is limited, but again, we had a good set of speakers who shared their views, and especially on the power and energy sector, we had two sessions with Dhruv Ravani. So those who are yet to have a look at those sessions can definitely learn around this sector. So I see few familiar faces. Devesh. So Devesh, if you are free, you can chip in for a casual conversation, and if anybody else has any questions or small inputs, we can surely invite their views as well. Hi Devesh, how are you? Devesh, you there? Yeah, hi, good evening, Prince sir. How are you? All good, all good. So Devesh, like, obviously around the topic which we are discussing now. So any thoughts around that, and maybe how you are placing yourself in current Mm, point in time? I think I've watched a video posted by CFA Institute, CFA Society India, um, a small chat with Govind Parikh sir uh, about how he invests his money and how he manages his money. I think that video is very relevant. Everyone should watch it because we as investors we always undermine the cash as a position in our portfolio. So everyone wants to be invested in the markets. There's no like if I think we all have we have all gotten decent returns in the market, more than we have expected. So I don't think for me, there's no rush to find new stocks, and frankly, I'm not able to spot many. So, I would recommend everyone to watch that Govind sir's video. I think that would be helpful, and I think cash is a very good weapon when if you are not finding value. That's the case with me at least. So yes, it doesn't yield much as compared to equities, but yes, at times um, it can be the dry powder left to fight when you get something of your taste in the market. So, Yeah, fair point, Devesh, which you just highlighted, and definitely the quality and the videos which are posted over the CFA Institute YouTube channel are like very helpful for all kind of investors. So definitely such videos should be watched time and again. We also got Cyrus sir with us, so we'll also invite his views, like how he's seeing or maybe placing himself in current point in time, and any view around the sectoral rotation by the IFIs or so. Yeah, thank you. Good evening, good afternoon, everyone. Good afternoon, Prince. I actually, every time I see the market go up, I feel more and more apprehensive as to how long this party can last. So I have, when I buy a stock, I have a checklist. And when I sell the stock, I look at the checklist which I use to buy, and I see what has been the improvement and what is going forward, what is going to be the runway for revenues, profits, etc. Now,
Uh, Public sector, defense, railways, power, these are all the sectors which have really run up a lot. But I'm not sure that they have reached their full potential. So one has to actually look at whether they have reached their potential or not, and also whether the valuations are commensurate with whatever potential is there going forward for the next 2, 3, 4, 5 years. So I'm happy to share my checklist with anyone. You can send me a direct message, and I can send you the Excel file. And I've got a range for each item. Like, for example, return on capital employed should not be less than 12%. And if it's greater than 20%, it's extremely good. So I've got three ranges: less than par, at par, and above par. So based on that, I actually take a call based on about 20, 30, 40 parameters, depending on how much you want to invest and what depth of detail that you're going to use. What I use is I use Screener. I have a paid version of Screener. So I use Screener and I pre program it in such a way that whatever the key parameters are, I use those parameters to judge the quality of the company while buying and selling. No need to sell a superstar script and no need to hold on to a dud one either. So that is my two penny bits. Thank you. Thanks, Cyrus sir, for your inputs. So, Devesh, even you voiced a similar opinion as our past speaker had, that the opportunities are limited and getting skewed day by day, going to this euphoria. And but when it comes to like whether the companies are supporting the thing, I mean, their results are supporting, their earnings are supporting the kind of appreciation in those companies are happening, especially the old economy stocks, which had done well, and obviously they were hated by a big sect of the market, quoting that these companies cannot create wealth, and the contrarians had made good money in last 2 years, to say. So apart from that, I mean, obviously, you raised a very pertinent point. Like keeping cash is a behavioral trait more than anything else, and obviously, when some volatility happen in such kind of market, the kind of value created, even if the broader market corrects by 5-10%, say, and the companies might correct by 20-30%. So obviously at that point in time we get opportunities. So there was like obviously anything interesting you are studying, I mean, which is not comfortable at current valuation, but maybe going forward, or to say that is a part of your watch list. Obviously a company name is not required, but again, maybe sectoral or anything you find promising as far as like study is concerned. Yeah. So, sir, you made a valid point there. But the thing is, I am a believer of India growth story. I think the next decade belongs to India. But the thing is, with large economies and everywhere in the world, you can see that there are cycles. I think the result season is a good pointer. It's a precursor that yes, the we were a bit overheated and we are cooling down. You can look at the FMCG numbers, the bank numbers, the NIMs posted by banks, and the slippages they are posting. So I think steep rise in everything in GDP numbers is never good for an economy. I think managing inflation and everything going forward, yes, structurally we are very well placed, but yes, there would be period of lulls. So there would be opportunities and uh, yes, like everyone is right now chasing stocks. There are very few. I am a value investor, so there is very few stocks where I think very few pockets where value is still there. But the
list goes on decreasing as everyone is chasing all the value in the market, and every day it disappears at a good pace. So I will sit and watch, but the sector where I would look is always where the organized game is going on, where the unorganized is getting organized. So I think organized mattress market in India is still very underpenetrated, and I think there's a lot of potential there. One should look there when valuations are comfortable. Right, Dinesh. And even lately, Mr. Nilesh Shah sir has also pointed out that we should all be focusing on the companies which are more domestic focused. And on the top of that, as we all know, the segregation between the discretionary and non-discretionary spend. So as we progress, obviously, we'll be spending more on the discretionary side, and the aspirational side of the large population will definitely drive the companies catering to those requirements. So those pockets we all should be looking at, and obviously. What value you want to enter in line with the growth visibility of those companies, totally an individual call, but again you should all be monitoring these areas. So coming to Cyrus sir, Cyrus sir, you were telling me about your checklist, the exhaustive checklist. So if say if you have some incremental cash and nothing substantial come I mean maybe pass through the criteria which you have on your checklist, in that point in time, so you add to your current positions, or you believe in keeping cash in those situations? I believe in keeping cash. In fact, sometimes when I feel the market is just too hot, I just sell across the board 5% because I find that that is the safest way, because invariably when you sell, the price of that share goes up, and when you buy it goes down. So across the board I just sell 5%. Right now I'm holding about 15% cash, and the way this market is going, I think I'm going to sell another 5% so that when everything goes pear shaped, I'll have some dry powder left. Otherwise, on the past, I've been investing since, the index was less than 1,000 Sensex. So I have never had an opportunity when everything has, gone bad. So I've not bought at that low price, but I feel now I have the luxury of having a larger portfolio because over time it has grown. So I like to I want to keep 20% in cash. And I also have this theory, I don't know if it's right or wrong, that, Mr. Buffett has got, I mean, I am nobody to compare myself to him, but nonetheless, he has got almost 20 to 25, some say 30% of his assets in cash. Now you can see every day the Standard and Poor is hitting higher highs, and I think yesterday it hit an all time high. So if he can keep 30% cash, oh, I think who am I to argue with that logic? So another quick question which comes to my mind. So if you are planning to go 20% in cash, so when you will be like deploying it fully, I mean so would it be basis the index levels, or depending upon the valuations you are looking in the companies in your watch list? Well, actually, it's a combination of both. My theory is that whenever there has been a severe meltdown, it starts with some external unanticipated event, not interest rates or not something like there was a subprime crisis, and then there was COVID, and before that there was Harshad Mehta, Ketan Parikh, 2000 crisis, and so many things. But they are all
unexpected events. So nobody can predict the unpredictable, and it's always the unpredictable that results in a crash. And more often than not, it starts outside India and then it filters through to India. And first, the Nifty gets hit. So, and in very quick succession, within 1 or 2 days or maybe less, the all the small caps get hit. And then you find that there are only sellers, no buyers. Everything is on lower circuit, going on for days and days and days. And some of the companies then start to become real bargains. But if at that time you don't have any cash in your hand, you can just look and wish. That's all you can do. So coming to the part of whether I want to buy the index at that time or whether I want to buy the companies like I said, I have a checklist, and if there are mouth-wateringly low valuations, then obviously I'll buy the checklist and I'll look especially at dividend yield. Dividend yield is one parameter where you can get, 7, 8, 10, 12% dividend yield in these kind of situations. Now, dividend yield means a stock has the power to pay out cash to its shareholders, which is really a very important statement. And as you know, public sector companies are the prime candidate because they are mandated to deploy as dividend 30% of their net profit or 5% of their capital and reserves. So they are the real beneficiaries. I don't know whether they will go down or not, I can't say, but that is really what prompted me to move into public sector units where dividend yields were very high about 2 years ago. Right. So you had pointed out on the organized mattress thing. So any sense on the total addressable market and any triggers which make you like believe that we can have a look at that segment? And on the top of that, we all agree that going from unorganized to organized is definitely a mega trend across sectors, specific to one individual sector. So definitely that should be looked at. Yeah, Devesh. Yeah, so TAM should be somewhere. So organized plus unorganized could be this mattress market in India could be around uh, 20 billion dollars per se in the future, because in China the number one mattress market company is organized mattress company is trading at around $13.5 billion valuation. The second in line is trading at $10 billion, and the third in line is trading somewhere close to $8 billion. So there is a big market there, and the per capita of China is not comparable to India. But yes, if we aspire to grow, if we reach a per this discretionary get a head start and we start spending as China is doing. So I think we are getting 40% of Indian mattress organized mattress market at close to $1.5 billion market cap. So yes, that's the opportunity available in India right now. But yeah, it's a long leap forward. There could be hiccups. It could take time. But I think this is something I'm a bit confident about that this can happen. Indian mattress market has a potential, and yes, I can see some good money flow in this sector. Thanks, Devesh. I also see Karan Bhai. So, Karan Bhai, just in case you are not occupied anywhere and free to share your thoughts, would love to hear you out. So, Parma Bear, you have raised your hand. You can unmute and ask your question. Yeah, I would like to know about the Bank of Baroda. It has growing. It has good growth potential and trading at very cheap valuations. Does it have any room for revaluation or P expansion?
So Aryan, although like stock specific questions we do not entertain, but again at the discretion of our speakers, like maybe Cyrus sir or Devesh, any like inputs on the business, not from buy sell recommendation. If you guys are tracking this, Cyrus or No, sir, Devesh. I'm not tracking, so I could not comment on that. Uh, Even Prince sir, I might take a leave. I have to reach somewhere. Sure, So sure, sure, Devesh. thanks for adding Thanks me for up. chipping in. Yeah, anytime. So Cyrus Okay, sir, you have any inputs around it? well, by and large, I don't, but I have some. You know, there are. If you look at the whole banking sector as a whole, HDFC Bank is one of the largest banks, and because they need to shore up their ratios of CASA ratios, they are increasing interest rates, so they need to draw away deposits from other bankers. As a result, is the whole scenario for interest rates is kind of HDFC is sucking out all the marginal players. So all banks will slowly start to have to match interest rates of HDFC, and net interest margins are going to shrink because ultimately, if everybody is going to raise interest rates and borrowing does not accept those higher rates, then net interest margins will shrink. So, till this HDFC matter comes to a balance where whatever they're borrowing, I mean, whatever their liability side and asset side is balanced, this interest rates will keep going up, and so cost of funds for banks will keep going up. okay, so sir. According to this theory, uh, do can we see a fall in in banking shares as their profits might get lower and lower from here as they are competitive environment, creating a competitive environment? I can't tell you whether they are fall, but they are not, especially public sector banks, are not overvalued. But even private sector banks are also undervalued. If you look at the median price earnings or price to book for banks, I mean, all of them are now trading at below this median. So they are not overvalued and therefore they are going to fall. It's just that this slight aberration is there because HDFC has to rebalance its asset and liability side, but not to an extent that it's going to disrupt everybody. Okay, okay, I'm getting your point. Thank you. Like investing in the banks and NBFCs is not an easy task because doing the due diligence and there are so many moving parts and it's very you need to be on your toes when you invest. Can I ask one more question? Yeah, please go ahead. So you will not answer any specific question, so I will ask it another way. What is your view on the largest NBFC in our country? Do you see it growing from here or shrinking from here as RBI is trying to shrink the what you can say unsecured credit market? यार देखो अपना तो बैंकिंग और एनबीएफसी में हाथ तंग है साइरस सर आप कुछ व्यू शेयर करें तो ठीक है अदरवाइज वी कैन लाइक गिव इट अ पास बट अगेन यार देखो बैंकिंग और एनबीएफसी जब तक आपको नहीं समझ में आता तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग आपको अवॉइड करनी चाहिए ऑल्दो लेट्स हियर आउट फ्रॉम साइरस व्हाट ही हैज टू से यू देयर सर हेलो आई थिंक Cannot some afford voice issue an expensive underwriter do the underwriting, and this is a very cheap and efficient way. But everybody is caught onto this game now, so everybody is doing it. So I don't know what's going to happen to this particular company you're referring to, but I mean the secret is out now. Shall I name the company? Bajaj Finance.
Um, Even if you hadn't named it, it was like obvious which company you were asking about. Anyways, Aryan, let's stick to the discussion, and maybe on other forum or spaces you'll find better people who can take stock specific questions, because our focus here is more towards like understanding the thought process and how we are placing ourselves and improving on the market behavior, temperament, or maybe talking about the pockets which appear to have some value going forward. Thank you for your questions. Yeah. So I guess if you guys have any more questions, so you can send in a request or maybe type in the comments so that we can take those questions. Otherwise, we'll wrap up in some time. And definitely, any feedback, any uh, suggestions on guest are more than welcome. We can. Okay. We also got Brajesh bhai. Hi Brajesh ji. हाय प्रिंस सर, कैसे हैं प्रिंस भाई? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। मुझे याद आ रहा है जब जब हमारी बात हुई है, एंड द काइंड ऑफ द सेक्टर्स एंड ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स you used to talk about, and they had done tremendously well. So you deserve kudos for picking them at an early point in time. बाकी अभी ऑल्दो लाइक देवेश और आपका कोई थॉट प्रोसेस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा ये बट फिर भी कैसे डेफिनेटली अभी क्या 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 लग रहा है सर, अभी क्या कर रहे हैं मार्केट में, करंट मार्केट? व्यू तो डेफिनेटली मैं और देवेश डिफरेंट तो नहीं बोल सकते, बट मैं एक चीज थोड़ा मार्केट में बोलना चाहूंगा इन जनरल पब्लिक को कि आपको स्टॉक्स चीप नहीं मिल रहे हैं और वैल्यूएशन अगर ओवर स्ट्रेस्ड है, दैट डजंट मीन्स कि आपको एक लाइसेंस मिल जाए कि आप शॉर्ट सेल कर दो। तो जनरल जो है मैं देख रहा हूँ पीपल आर शॉर्टिंग एंड डूइंग मेकिंग लॉट ऑफ लॉसेस इन options and derivatives. So I will just advise them, try to save the capital and जितना हो सके अगर आप बाजार में, सबसे पहली बात है कि आपको मार्केट में पैसा नहीं खोना है। अगर ये बात अगर मान ली आपने और इस बात पे आप स्टिक रहोगे तो मार्केट आपको आगे पीछे रिटर्न देगा। किसी को किसी चीज में वैल्यू लगती है, हो सकता है जो वैल्यू हमको नहीं दिख रही है किसी और को दिख रही है, दे माइट बी हैविंग गुड रीजंस, उनके पास और ज्यादा इंसाइट्स होगी, क्योंकि मार्केट में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट्स द मार्केट। कोई चीज जनरली स्पेसेस में और सब में भी देखते हैं लोग अरोगेंट हो जाते हैं, लोग जस्ट एक दूसरे से डिस्कशन में कोई अगर किसी की बात नहीं मानता है, किसी को बाजार आगे और बढ़ता लग रहा है, किसी को खराब लग रहा है, तो इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग आपके पास सिंपल चॉइस है। यू अगर आपको बुलिश हो तो आपको शेयर्स ले सकते हो, आप बेरिश हो तो यू कैन सेल। अगर आपको स्टॉक अवेलेबल है एफ में तो आप मार्जिन देके सेल कर सकते हैं। उसमें आर्गुमेंट जैसी कोई बात होती नहीं है जो ज्यादातर स्पेसेस में होती है। सो बस वही एक बात है। और स्टॉक स्पेसिफिक तो आप वैसे भी कोई डिस्कशन करना नहीं चाहिए, पर जो सेक्टर दिख रहे हैं तो कुछ लिमिटेड सेक्टर्स हैं, जैसे सिंगुड स्टॉक्स मुझको लगते हैं अभी भी यहाँ से अच्छे चलना चाहिए, क्योंकि स्टिल दे आर अवेलेबल एट ए रीजनेबल वैल्यूएशन एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। और अगर जो साइरस सर का एक थ्योरी है कि आप इनिशियली छोटा स्टेक लीजिए और फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते जाइए, उस तरीके से अगर कोई सिंगुड स्टॉक्स में एंट्री करता है तो देर इज अ गुड स्कोप वहां पे आने वाले 3 से 5 साल के टाइम फ्रेम में अच्छा पैसा बन सकता है। और बाकी रहा एक पर्टिकुलर साइक्लिकल इंडस्ट्री है, अब अगर उसको कोई इजीली प्ले कर सकता है तो शिपिंग सेक्टर इज लुकिंग गुड, क्योंकि जो रेड सी के इश्यूज हैं और जो हम लोग टैंकर रेट्स बढ़ते हुए देख रहे हैं, वो सीधे सीधे दिख रहा है कि कंपनीज प्रॉफिट कर रही हैं। और लिस्टेड में कोई ज्यादा कंपनियां है नहीं, ओनली देर आर 2 कंपनीज, वन इज पीएसयू एंड वन इज प्राइवेट कंपनी। और जो प्राइवेट कंपनी है वो 1991 से अनइंटरप्टेड डिविडेंड दे रही है। इट इज अ वेरी गुड हिस्ट्री, और अभी दे आर मेकिंग सो मच ऑफ प्रॉफिट दैट दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड्स विथ एवरी क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो वो कंपनी मुझको अच्छी लगती है और डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, और स्टॉक जो उनकी एनएवी वो लोग हर क्वार्टर में रिपोर्ट करते हैं उससे 20-30% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। जबकि अगर आप पूरा वर्ल्ड में आप देखेंगे ग्लोबल ट्रेंड, तो जो भी शिपिंग स्टॉक्स हैं वो एनएवीज के
1.5 टाइम्स तक ट्रेड हो रहे हैं, से स्कॉर्पियो टैंकर या टीके टैंकर या नॉर्डिक अमेरिकन टैंकर्स या अदर हाफनिया है और इंटरनेशनल सीवेज हैं, ऐसे बड़ी कंपनीज हैं ये सब यूएस की। उनके मार्केट कैप वगैरह देखते हैं तो इंडिया में स्टॉक्स अभी काफी सस्ता है, और बाकी लोगों को अपना रिसर्च करके और अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के से एडवाइस लेने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और साइक्लिकल बिजनेस में जब साइकिल टर्न होता है तब आपको उसमें से एग्जिट करते भी आना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स जो है फ्यूचर ग्रोथ पे चलते हैं, कभी भी प्रीवियस अर्निंग्स के ऊपर स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते। तो अभी जो लोग नए आए हैं उन लोगों को ऐसा आइडिया नहीं होता है, क्योंकि डेटा जो आपको मिलते हैं वो सब पुराने होते हैं। आगे क्या होने वाला है वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा। अगर आपको मार्केट में कोई बड़ी ग्रोथ लेनी है, कोई बड़ा आपको पैसा कमाना है, ठीक है मार्केट बढ़ रहा है 10%, 20%, 50%, लोगों ने इस साल पैसा बनाया है। जिन लोगों ने पैसा बनाया है सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन मेरा ये मानना है कि पैसा बना करके बुल मार्केट में आपकी सिचुएशन ऐसी होना चाहिए कि वर्स्ट के सिनारियो में बियर मार्केट में आप कैसे सरवाइव करोगे। क्योंकि जब बियर मार्केट आता है तो शुरू में कोई उसको मानने को तैयार नहीं होता है, और सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को ही होता है जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है। तो इसलिए होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए मार्केट में। क्योंकि कोई भी चीज आज जो आपको दिख नहीं रही है वो कहाँ से आएगी, क्या होगा, जैसे साइरस सर ने बताया 92 देखा हुआ है, 2000 देखा हुआ है, फिर 2008 देखा हुआ है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये लीनियर मूवमेंट और मार्केट इसी तरीके से हमेशा बढ़ता रहेगा। और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स आए हैं ये रिटर्न्स हमेशा आएंगे ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा होगा तो कोई कुछ दूसरा कोई काम ही नहीं करेगा, सब स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। बट ठीक है, अभी सिप के थ्रू और जो पैसा आ रहा है मार्केट में और इंडियन पब्लिक आ रही है, इंडियन स्टोरी अच्छी है। बट कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो आप 2028 2030 तक के अपने वैल्यूएशन आपने पकड़ करके वहां तक के वैल्यू करके आपने भाव दे दिए हैं, तो उनको परफॉर्म करना और उसके लिए जो गैप है ये गैप कभी ना कभी मैच होगी। तो वो चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। So true. Very, very relevant points you just highlighted, and especially this और is the common trait among the retailers that they keep in denial mode until unless things are clearly visible, especially as you were discussing about the beer phase thing. And everybody is right in hindsight. Initially, like everybody said that this time it's different, but how much actually it is different is a question to ask for. And what the biggest mistake we all do in these euphoric conditions is like we forget to make a segregation of market luck versus our skills. So definitely, for those who have spent a long time in the markets, they are aware, and most likely they stay humble because they know that market humbles everyone. So definitely, like we should be looking out how much of the things are already in price. Things can stretch, and the euphoria can extend. Obviously, on both the sides, we can see extremes. But again, as rightly pointed out, if you have to stay here for long, there has to be some process, and you should be looking for value supported by the future growth, because as rightly pointed out, you make money on the future growth aspects of the companies, which can be reflected in the earnings going forward. Great points. And definitely, like for everyone, domestic focused companies should be looked at, because we are a growing economy and have a huge population, so consumption is going to be the mega trend. And in that, like you need to identify, because information is a commodity, right? So even if we are talking today, we are not telling you guys anything out of the box. But again, how you what we say, uh, you I mean read that information and find out the uh, important points, and basis that you form
some basis on the basis of which you do your diligence about the business of the companies, or maybe connecting the dots for any of the sectors. That way you can surely proceed, and it's a gradual learning process. Even if you spend decades in the market, there is no guarantee that you'll always be right. You'll make your side of mistakes, but again, as we progress, we should not be repeating the same kind of mistakes. And as the biggest takeaway of today's interaction is that keeping in cash is also a position which most of us don't realize, and we also get an urge, like whenever we have money, we feel like that we should be deploying all of it. Although there are people who always believe that they are 100% invested all the time, no harm in that. But again, they also have a very sound process in place basis which they invest, and they know that they have spent some time and have done their due diligence basis which they invest. So everybody's style is different. Everybody's the ticket size or the horizon, risk profile, everything is different, and this finance is very personal aspect. So, and especially for people who are just starting out, definitely the ticket size are small, and if there are some, I mean, if you have a sizable corpus and you want to start, so it would be advisable that you do not directly jump in without understanding the nuances of market. When the ticket size is small, there is an advantage that even if you make a mistake, then definitely you can recoup from that. But if you directly jump in the market with a very big corpus, and if you don't understand the market nuances, there are high chances that you'll burn your hands, and in those situations you blame the market or maybe some person through which you are introduced to this market. So blaming others is the easiest thing, but owning your mistakes is definitely a difficult aspect. And even if we get ideas from other people, it is our money, and if we make a decision, then we should also own the decision, even if we make money or lose money out of that. So we got one more speaker. Let's see. I see Ameya Bhai and Karan. You guys, I mean, doesn't look good as listeners. Yeah, do join as speakers. Would love to hear you out. Spanish Jut, you can unmute and ask your question. Spanish Jut, you are still on mute. स्पेनिश चैट, आपका कोई क्वेश्चन है या मजे लेने के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है? सो ब्रजेश भाई, शिपिंग के अलावा और क्या मतलब अभी आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, एज आई टोल्ड, देवेश ने भी बोला और व्यू पॉइंट सेम है। कोई बहुत बीइंग ए वैल्यू लवर, और ऐसा कोई स्टॉक्स अब बहुत ज्यादा मार्केट में या कोई सेक्टर्स ऐसे कोई बहुत अपीलिंग प्राइसिंग पे दिख भी नहीं रहे हैं। और अगेन वही, बट आप अगर स्पेस में या पब्लिक में आप ये बोलते हो कि सब चीजें ओवर प्राइस हैं, तो फिर लोग सोचते हैं पोर्टफोलियो खाली कर दें या स्टॉक्स को शॉर्ट कर दें। वैसा आइडिया नहीं है। इट डजेंट मीन्स कि आपको नए आइडिया नहीं मिल रहे हैं, तो लाइक टू सिट ऑन सम कैश। और वैसे जो मैंने आपको आइडिया, तो वही एक शिपिंग है। सिन गुड सेक्टर इज लुकिंग गुड, स्लाइटली कॉस्टली है, लेकिन कुछ भी अगर आपको कुछ स्टॉक्स और कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो आपको प्रीमियम पे ही मिलेंगे हमेशा, और आपको उनको प्रीमियम पे करना ही होगा। सो पर्टिकुलरली Brajesh and Cyrus, like if you guys have assessed the Red Sea issue, तो कहाँ कहाँ पे उसका impact आप देख रहे हैं, और like if the
इश्यू परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग, तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? Boss, what to say यार, you have no idea. दो खोपड़ी ये लोग मारा मारी करता है and everybody else is caught in that crossfire. I don't know whether this will expand, it will settle down, what the US will do. See, these are all these, things which there is no predictability, and you don't know what the damage will be if the escalation takes place. So I really can't say. ब्रजेश जी? So Amiya bhai, like we were initially discussing कि sector wise FII का inflow outflow का एक data अभी आया था, although the time span is very less, 2 weeks only, but in that like the FIIs have withdrawn from the IT sector as well. So in that line, if you have any views and if free for 5 minutes, so would love to hear that out. So ब्रजेश जी, आप रेड सी के इशू के लाइक कुछ इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं? सम वॉइस इशू आई गेस, ब्रजेश जी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। सायरज जी, आप सुन पा रहे हैं ब्रजेश जी को? Sorry, Prince bhai, I got a call, ओके so I ओके। didn't सो ब्रजेश, आई listen वाज what you asked. आस्किंग एनी थॉट्स अराउंड की जो रेड सी वाला इशू है, अगर वो परसिस्ट करता है तो गोइंग फॉरवर्ड क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं एंड व्हिच ऑल सेक्टर्स विल बी इंपैक्टेड बिग टाइम? अदर सेक्टर्स का तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट सेक्टर्स पे तो फर्क पड़ेगा ही, क्योंकि उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी। और लेकिन मैं शिपिंग कंपनीज में बुलिश हूँ, पर्टिकुलर टैंकर्स में, तो टैंकर्स के रेट ही बढ़ रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर रीजन से। और स्टॉक में ऐसा है, जिस पर्टिकुलर स्टॉक की मैं आपसे बात कर रहा हूँ या जिसमें मैं बुलिश हूँ, वहाँ वैल्यू है, इसलिए मेरे को अच्छा लगता है। बाकी एज सच कोई बहुत बड़ा उससे क्या होगा, कितने दिन चलेगा, वी डोंट नो, क्योंकि जिस तरीके के वॉर चल रहे हैं, और 3-4 वॉर शुरू हो चुके हैं, और सब लगता है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, बट दे आर नॉट एंडिंग। सो इट्स वेरी difficult to say what actually going to happen. Until how long it will continue, we can't say. So no clarity on particular that. राइट। या सो everybody is like there is no denying this, that we are in a very sweet spot and we have a secular Indian growth story. And even in our last spaces we were discussing that although these election results are obviously if some unexpected happens, so there would be short term story, but seeing the long term growth trajectory, whatever be the election results, the secular story will be in place. But again, there are some apprehensions that different governments have a different set of things, and obviously we are in a country wherein like appeasement is one thing which has its own place, but broadly like we cannot say that the growth of the country is linked to any political party. So whosoever comes to power in next general elections will carry forward from here, and definitely things will be going in our favor. But again, we should be able to make a segregation that what's happening in on ground and what is being narrated in the market. So and always look for like whatever information you are getting, so how much of that is already priced in. So that has to be like keep in mind. So we got one more speaker, Bhupesh. So Bhupesh, you can unmute and ask your question. गुड इवनिंग ब्रजेश सर, सायरस सर। सर एक क्वेश्चन है, क्यूरियोसिटी है म्यूचुअल फंड्स के फ्लो को लेके। जैसे रिटेल फ्लो अभी इंडिया में इतना हाई है, तो जैसे चाइना जापान मल्टी ईयर कंसोलिडेशन में चले, या
अपने मतलब चाइना जापान ने तभी ब्रेकआउट किया काफी साल के बाद, चाइना अभी भी डाउन है, तो वहां भी तो रिटेल फ्लो रहा होगा ना, इवन एफ आई इज नॉट पुटिंग मनी और समथिंग। सो इंडिया में कभी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो सिनेरियो होगा या रिटेल फ्लो मतलब स्ट्रांग है तो जस्ट मार्केट विल कंटिन्यू टू गो अपसाइड? और ये चाइना में मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड का इतना फ्लो तो दूसरी कंट्रीज में भी रहता होगा ना, फिर भी उनके मार्केट ऊपर नहीं गए या कंसोलिडेट किए काफी लंबे टाइम तक। तो उस पर कोई मतलब व्यू है कि इंडिया में कुछ ऐसा सिनेरियो मे बी अभी ना हो और 3-4 साल बाद ऐसा हो सकता है कि फिर वो सालों साल साइडवेज हो जाए, म्यूचुअल फंड के रिटर्न बहुत ही कम हो? तो भूपेश भाई देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट लिक्विडिटी पोजीशन तो साइकिल्स में रहती है। कभी मार्केट में अच्छी लिक्विडिटी होती है, फिर इंटरेस्ट रेट्स के लाइन में लाइक ऑब्वियस सी बात है, जब आपको बैंक में या फिक्स डिपॉजिट्स में काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है तो एक नॉर्मल जनता की टेंडेंसी रहती है कि वो अपना पैसा वहां ज्यादा सिक्योर फील करते हैं, और जब लगता है कि वहाँ इंटरेस्ट रेट कम है तो वो पैसा नॉर्मली मार्केट की तरफ ज्यादा अ, आने लगता है। तो मार्केट तो यार लिक्विडिटी ड्रिवन है, अब उसमें म्यूचुअल फंड के कंट्रीब्यूशन हो सकता है कल को बियर फेज आएगा जब मार्केट में यूफोरिया नहीं होगा, सब पेसिमिज्म होगा, तो लोगों का ऑब्वियसली दे कट डाउन ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स। तो दैट इज अ फेयर पॉसिबिलिटी, बट उससे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो चीजें हो सकती हैं, बट लॉन्ग कंसोलिडेशन तो देखो यार सब्जेक्टिव होने को हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और सिंस वी आर ए ग्रोइंग इकोनॉमी, और हम कभी से ही सेविंग्स इकोनॉमी रहा है, और आजकल जब लोगों के बीच में अवेयरनेस आ रही है तो दे आर डाइवर्टिंग देयर फंड्स मोर टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से, और आपने रिसेंटली देखा होगा कितनी सारी न्यू एएमसीज रजिस्टर हो रही हैं, तो जो फंड मैनेजर्स या जो एएमसी को रन कर रहे हैं वो पिछले 20-30 साल से 40 साल से मार्केट में हैं, तो उन्होंने भी कुछ आगे देखा होगा, तभी वो अपना नए वेंचर्स में जा रहे हैं। बट अगेन पॉसिबिलिटीज तो हमेशा रहती हैं। एनीथिंग मोर टू ऐड ब्रिजेश जी, साइरस जी? Brijesh, you go ahead, boss. Anything to add? I'll go after you. देखिए भूपेश जी, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो रिलीवेंट है, लेकिन ये कब क्या होगा ये पता करना मार्केट में बहुत मुश्किल है, और इसका प्रैक्टिकली किसी के पास भी आंसर नहीं होता है। सब कयास लगाते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन अभी जो दिख रहा है उसमें आप देखिए तो एक 17-18 हजार करोड़ का आपको एसआईपी का पैसा आ रहा है, और मंथ में 20-22 वर्किंग डेज होते हैं, और तेने 1 हजार करोड़ का एक रफली पैसा रोज मार्केट में नया आता है, तो वो एक लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। और काफी डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, लेकिन अभी एक डेटा ये भी है कि डीमेट अकाउंट्स आर एम्प्टी, लोगों ने स्टॉक्स काफी बेच दिए हैं, ज्यादातर लोग जो हैं ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ऑप्शन और उसमें ही ट्रेड कर रहे हैं, एंड दे आर स्पेकुलेटिंग इन द मार्केट। सो अभी मेरे हिसाब से मार्केट में काफी स्कोप है, लेकिन बीच बीच में सेक्टोरल करेक्शंस, और ये बुल मार्केट बिल्कुल वैसा ही चला है जो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, और अगेन आई विल रिपीट इट, इट्स जस्ट लाइक जो अपनी हर्डल रेस होती है, तो जो बैटन पास ऑन हो जाता है और मार्केट हर हर्डल को पास कर रहा है और वो अगले सेक्टर को लीड दे देते हैं, दे स्टार्ट्स रनिंग अगेन। तो मार्केट में भी डेली वही होता है। अभी आप देखिए मार्केट में 20-25 हजार करोड़ की एफआईएस की सेलिंग वेरी वेल एब्जॉर्ब, और एक पर्टिकुलर सिंगल स्टॉक की एचडीएफसी बैंक की वजह से ही थी। तो रेजिलियंट है, वी कांट से कि ये रेजिलियंस कब तक रहेगा। और एसआईपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जो एसआईपी में लोगों का पैसा बना है, और जो एक इंडियन इन्वेस्टर्स की या इंडियन लोगों की मेंटेलिटी होती है सेविंग की, तो कोई भी ये छोटा आदमी है, कोई भी है, कोई 2 हजार 3 हजार 5 हजार रुपए महीने की जो छोटी छोटी सेविंग्स कर रहा है, वो एसआईपी इतने जल्दी बंद हो जाएंगी ऐसा लगता नहीं है। गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी भी इतनी क्लियर पहले कभी नहीं थी। हर बार इलेक्शन के पहले किसी के पास कोई क्लियर व्यू नहीं होता था कि अब अगली गवर्नमेंट किसकी आएगी। तो ये सब क्लेरिटी है, तो इसलिए अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। बट अगेन जैसे साइरस सर ने बोला और जो पुराने अनुभव में, जब फॉर मी नो वरी इज अ बिग वरी फॉर मी, क्योंकि पिछले 3 साल में मार्केट ने इट इज क्लाइंब्ड ऑल द वॉल्स ऑफ वरीज एंड क्लाइंब्ड वेरी सक्सेसफुली। तो अभी तक तो ये हुआ है।
और उसका रीजन ये भी है कि मोस्ट जो जनरल पंटर्स हैं, जो मार्केट में जो कंसेंसस है, कंसेंसस लोगों को ये है कि लोगों को सब फोमो में मार्केट छोड़े हुए हैं लोग, उनको सब फोमो फीलिंग हो रही है और उन लोगों को यही लग रहा है मार्केट क्यों बढ़ रहा है, तो ये जल्दी से घटे फिर तो या वैसे तो हम घटे तो बहुत सारा। चाइना की पॉपुलेशन भी हमसे ज्यादा है, राइट? तो वहाँ के लोग भी तो म्यूचुअल फंड में डालते होंगे, तो उनका देखिए रिटेल फ्लो। चाइना के साथ इशू क्या है, चाइना की जो वहाँ का मीडिया है और वहाँ का एक्चुअल क्या है, आपको सीन कभी भी मालूम नहीं पड़ता है। तो चाइना के बारे में मैं कुछ कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मनीष चौखानी सर ने जरूर अभी एक इंटरव्यू में बोला है, उनको चाइनीज ईटीएफ में पैसा लगाना बहुत अच्छा लग रहा है और उनके हिसाब से 2-3 साल में चाइनीज ईटीएफ में पैसा लगाया हुआ डबल हो जाएगा। बट ये अगेन इट्स नॉट माय व्यू, ये नहीं नहीं, उनका मेरा व्यू है। क्वेश्चन तो दूसरा है। मैं चाइनीज मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं मतलब पॉपुलेशन, जैसे कंट्री के रिटेल फ्लो की बात कर रहा हूँ कि चाइना में भी तो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालते होंगे या नहीं डालते, तो उनका जो पॉपुलेशन देखिए हमसे ज्यादा है। मेरा मेरा कुछ भी कभी चाइना के बारे में ना कोई स्टडी किया हुआ है ना मेरे को कुछ आइडिया है, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर। हो सो सकता है साइरस सर विदेश के पास क्या। सर सिर्फ पॉपुलेशन, कोई ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन है तो वो मार्केट को ड्राइव करेगा। तो वहाँ की इकोनॉमी में अगर ग्रोथ विजिबिलिटी होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे पैसा आएगा, और लोगों को लगेगा कि वहाँ विजिबिलिटी नहीं है तो ऑब्वियसली पैसा नहीं आएगा। बाकी साइरस जैसे सर, अभी यानी यानी पिछलर में जितेंद्र सर आए हैं, अगर ही फ्री, अगर आप प्लीज भाई हाँ, उनको मैंने अगर आप उनको एक बार रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट दे भेजी है सर को कि अगर हाँ फ्री होंगे तो सर ज्वाइन करेंगे। और डेफिनेटली अभी उन्होंने रिसेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर किए थे, तो कुछ ऑडियंस के क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली वो लेना पसंद करेंगे। बट अगेन अगर वो फ्री होंगे तो वो ज्वाइन करेंगे। जी सायरस जी। See, if you look at the big picture, there are two types of flows into India: local flows and foreign flows. As far as local flows are concerned, everybody is gung ho. Everybody feels that India has a great future, and very rightly so. And the growth potential is enormous. Our per capita income is less than 2,500, and 2,500 is the threshold limit. Once you cross that, then there is exponential growth in the economy and therefore in the markets. So everybody is putting SIP, sorry, and everybody is buying the dip. Whenever there is a dip, it gets bought into and the market goes up further. So as far as local flows are concerned, there is no problem. Now, if you look at foreign flows, you have to understand that when FIIs put money into a country, they have various options all across the world. Everybody in India feels that we are the best of the best and therefore we must get the maximum flows. But we are also the most overvalued market. So when FIIs look at India, they see a very expensive market, but they see fantastic demographics. Even China, although it has got a $1.35 billion billion people population, because of this one child policy, the demographics are shifting against China. So, 50 years from now, there will be a lot more people to take care of. Older people will become a much larger percentage of the population, and the younger people will have to support that. And that is the same problem that has happened in Japan. That is the same problem that is happening in Europe. The only country that seems to have escaped this is America, because they have so much immigration going on. I mean, they may not like it, but the fact is there is a lot of immigration and population growth is keeping track with what is the population aging. So they don't have that problem to that the same degree. But of course, we are in a much better position. So as long as FIIs provide that top up money, so SIPs will always buy, FIIs will always buy. When the market falls, you will always find that when the market falls, FIIs are selling and DIIs are buying. So this up-down business continues. And when FIIs buy, then DIIs pull back a little. So the net inflow outflow of the market is not so dramatic to have a catastrophic event. Like I said earlier, that catastrophic event will happen if something from outside happens. And like Brijesh said, there is no way, that you can predict this.
And also, as he rightly said, in China, no, China may be a much more attractive market in terms of valuations. But the problem is nobody trusts the government. They think, all the data that is sent out, that is published by the Chinese government has to be taken with a pinch of salt. They say that the real growth is not 5.5%, it's much lower. But Chinese government don't want to admit that because they feel it'll cause a whole series of different cascading events. And the second thing is, for the first time in several years, the FII flows to China have been very, very slightly negative. This is a very telling thing. That means people, even though they are finding bargains, they are feeling very apprehensive about putting fresh money to work. All right, thank you. So we got more speakers who can ask their questions. So Amitesh, you can unmute and ask your question. I mean, so many big faces, Jiten bhai, Aditya sir, Ameya. So whosoever is free, I would request them. मतलब आप लोग listener में अच्छा नहीं लगता, please join us speakers. Yeah, Amitesh, quickly you can unmute and ask your question. Amitesh, okay, Anudeep, you can unmute and ask your question. Yeah. Hi everyone. I quickly want to understand on these and recent listings, IRIDA, like growing at the stock price growing at a rampant pace. I know I had a look at the results; they were good, but I'm feeling that the stock prices are running much ahead of its results. I'm new, like little new to the market, so I'm trying to understand how they see it. Sandeep, I guess you have answered your question yourself. So if things are moving ahead of the financials and obviously there is euphoria in the market, but again stock specific मत बोलो यार थोड़ा मतलब वैसे ही पहले ही मतलब इन स्टॉक्स में आग लगी हुई है और पब्लिक फोरम पे स्टॉक्स डिस्कस करना इज नॉट अ वाइज थिंग. Sure, sure. Sorry. Thank you. Anything other than this we can help you, so would love to do that. Yeah, sure. As of now, I don't have any. Thanks for that. Yeah. Thanks. So let me see if we have any questions in the comment side. Yeah, Akshay, you can unmute and ask your question. Hello everyone. Yeah, hi. Sir, my question is regarding कि बेसिक्स हम देख रहे हैं कि 7-7.5% का हमारा जीडीपी ग्रोथ ये दिखा रहे हैं, मतलब या हो रहा है ऑन ग्राउंड जो भी है. बट बेसिकली आप देखोगे कि जो भी मैंने कल एचयूएल के रिजल्ट देखे हैं, इससे पहले मैरिको के भी रिजल्ट देखे, तो एक वो बेसिक नीड है इंडिया में जो हर घर में मतलब तेल साबुन पानी यूज होता है, तो वहाँ तो मुझे दिख नहीं रहा कि मतलब इतनी ग्रोथ उन कंपनियों में है. तो ये जस्टिफाइड है कि जीडीपी ग्रोथ वगैरह इतना हो रहा है या किसी और सेक्टर की वजह से इसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा हो, तो इसके ऊपर कुछ बोल सकता है? So Akshay, I think the companies which you just named, तो मेरे ख्याल से यार उनकी penetration पहले ही हो चुकी है और अगर कुछ वो I mean तो कुछ नया लेके आएंगे, कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स वगैरह, तो वहां पे ग्रोथ ज्यादा आएगी. बट नॉर्मल आई मीन माय लिमिटेड नॉलेज है ये, बाकी अभी और पूछेंगे
if anybody has answer to that. But again, आप जब पेनिट्रेशन इतनी हो गई है तो वहां पे आप एक नॉर्मल जो उनका मार्जिन्स है उसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं कि आपके मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं और वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, तो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट ऑन दोज लाइंस. Baki, Cyrus sir, Brijesh sir, if you have more refined answer to that, I would love to hear that. वैसे प्रिंस भाई, ये जो एफएमसीजी कंपनी मैरिको, एचएल, these are big brands और ये they are well discovered and well settled companies. अब इनको आप अगर इनके एक क्वार्टर के रिजल्ट से आप इनका अगर फ्यूचर एनालाइज करेंगे या इससे आप अगर बहुत सारी चीज देखेंगे तो वो उसको एनालाइज करना इट्स नॉट ए राइट थिंग, क्योंकि कंटिन्यूसली आपको अगर इनको देखना है तो ये कंपनी आपको मिनिमम एक साल, अगर मार्च के रिजल्ट आते हैं खराब तब आप सोच सकते हैं कि ऐसा है, क्योंकि इतनी सारी सीजनलिटी, इतनी सारी डाइवर्सिटी है कंट्रीज में, इतने सारे इनपुट कॉस्ट से रिलेटेड मैटर्स, इतनी, क्योंकि क्वार्टर में कौन सी बिलिंग है कब, अभी कुछ एचयूएल में शायद कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स का कुछ न्यूज था कि डिस्ट्रीब्यूटर्स अनरेस्ट वगैरह चल रहा है, वो लोग कुछ, तो टाइम टाइम पे काफी कुछ चीजें ऐसी होती, हो सकता है उतनी स्टॉकिंग नहीं या उतनी बिलिंग नहीं हो, तो कांट से, लेकिन एक क्वार्टर के रिजल्ट से ये जस्टिफाइड करना और ये क्लू लगाना कि इकोनॉमी स्लो हो रही है, क्योंकि हर मंथ में जीएसटी डेटा जो आ रहा है और जीएसटी डेटा बढ़ के आ रहा है, तो जब तक वो बढ़ के आ रहा है आई डोंट थिंक कि ये कोई बहुत बड़ा इशू है। और जब मंथली जीएसटी डेटा आपके पास अवेलेबल है तो एकदम से ये सोचना कि वी आर गोइंग इनटू रिसेशन या बहुत चीजें खराब हो रही है, और रोज कोई ना कोई आपके पास डेटा आता है तो कुछ आपको अच्छा लगेगा, कुछ खराब लगेगा, और सब नंबर्स जो होते हैं जब हम देखते हैं तो क्यू ऑन क्यू, ईयर ऑन ईयर, तो फिर जो बेस इफेक्ट होता है, अगर जब बेस इफेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है तो नंबर्स थोड़े से, आपको थोड़े भी इन आउट कम ज्यादा होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बहुत खराब हो गए और ये बहुत अच्छे हो गए, तो बहुत डिफिकल्ट है एक क्वार्टर के रिजल्ट से कुछ भी असेसमेंट करना। Cyrus sir, you have any inputs to make? I think is so. Akshay, I think I mean you must have got the answer to that, or more refined चाहिए तो आप थोड़ा wait करो, next sessions में answer करवाएंगे. Anything more on your part? And I just checked with Jiten sir, तो sir थोड़ा busy हैं तो he won't be able to join, so he'll be a happy listener today. So next is stock market scientist. I mean, you can unmute and maybe ask your question or limited input if any. Hi, thanks for giving me this opportunity. So, basically, I'm a technical kind of trader, but I am just learning the fundamental aspects. So, just want to understand that once we're looking for a long-term, move to gain to ride the long-term move. So, what aspect? Like basically, I focus on mostly EPS and sales and profit margin (OPM). So apart from that, do you think that I need to analyze all the inventories or maybe debt and the ROA value, all those things, or EPS or sales are sufficient to build up my learning into my with my technical? Yeah, technical वाले तो ये claim करते हैं that they are ahead of the fundamental guys and they I mean enter in the stage 2 and exit before the stage 3 or stage 4 starts. Absolutely. So basically यार देखो fundamentals पे मैं ज्ञान देता तो अच्छा नहीं लगूंगा, but अगर if you have time तो definitely there are many sessions with the eminent financial market practitioners on my YouTube channel, so that is one place. Or apart from that there are many resources available, अच्छी अच्छी बुक्स भी हैं, एक SOIC करके चैनल है उसमें भी बेसिक्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं. बाकी फंडामेंटल्स में यार जितना आप कंपनीज
के बारे में पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपको सेक्टर स्पेसिफिक क्या क्या न्यूएंसेस चेक करने हैं, क्या देखना है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल पिक दोज न्यूएंसेस। एकदम से कोई ये कहेगा कि मुझे फंडामेंटल सिखा दो, तो यार मुझे मैं अभी तक नहीं सीख पाया हूँ, तो मैं क्या क्या ही सजेस्ट करूँ। बट अगेन बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने हैं, उसकी गाइडेंस है, मैनेजमेंट के बारे में देखना है, मैनेजमेंट इज इट लाइक जो गाइडेंस दे रही है उस पर फुलफिल कर रही है नहीं कर रही है, इंडस्ट्री के डायनेमिक्स देखने हैं, डिमांड सप्लाई देखनी है। तो अल्टीमेटली जो हार्डकोर टेक्निकल गाइज होते हैं वो इस पे गिव अप ही कर देते हैं, कह रहे हैं यार इतना मगजमारी क्यों करनी है। और one simple way is like you can definitely, like if your pocket allows, so definitely you can have access to some good research reports about companies, so that is again one good source through which you can help yourself on the fundamental aspect, because क्या होता है कि उसमें आपको मान लो कोई company है which is coming on your radar basis technicals and you have a good report access, No right? sound is coming. Is there a problem or? Is it for you only or everybody is facing that? Brajesh, No, stop. everything. Your voice is very unclear to me. I guess. Okay, thanks. I'm not having any issue. Okay, so if something is coming strong on your charts and you have a very good research report from a person who has Yeah, I just credibility, heard the responses. Thank you. yes. So basis that, I mean, you can get a sense that that person Anyone has can throw any light on Cyrus ji, like chemical companies, especially specialty chemical companies, and Cyrus what sir. is the China position, and are they? So, Cyrus sir, I think some issue on your part. You are unable to hear my voice. So it was mixing. So I muted you, and maybe if you are able to hear me, you can drop and join again as a speaker. So SMC, that is the way I do यार, like, and on the top of that बिल्कुल आपको बहुत streamlined तरीके में देखो, definitely आप देख सकते हैं। और on the valuation aspect, like different sectors has different I mean suggested ways to do valuation, तो उसके basis पे आप सीख सकते हैं। और उसके अलावा तो यार जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे, kind of। So let's move on to ब्रजेश जी, आपको कुछ इनपुट देने हैं यार, मतलब मेरा तो ऐसा ही वेग आंसर होते हैं। नहीं, आपने जो बोला काफी हद तक सही है। आई विल लाइक टू ऐड वन मोर थिंग। यू स्टार्ट लुकिंग एट, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द स्टॉक प्राइस फॉर ए फंडामेंटल रिसर्च, you start looking at the market cap of the company. That is a very important aspect. And rest, as the prince said, it is very difficult to answer and teach in few minutes a fundamental of the company. Different sector and different peers are there, and so many things. Some companies are affected by global factors, some are by domestic factors. So it's very difficult, but it comes to you with the experience only. So, and in technical analysis, what you happens, you can start from the day one and you have all the thing. But generally the technical analysis में क्या होता है, जो चीज आपके पास अवेलेबल है वो सबके पास है। So इसलिए टेक्निकल एनालिसिस में ये होता है कि कई बार होता है कि लोग ब्रेकआउट में स्टॉक्स लेते हैं और वहां से स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं और सब कुछ होता है। बट अगेन इट्स ए वेरी लॉन्ग डिबेट। उसमें जिसको जो ठीक लगता है और जिसका जैसे पैसे बनता है, ही इज राइट इन हिज ओन वे। सो इसलिए उतना ही बोलूंगा। बाकी आपको जो प्रिंस ने बताया, यूट्यूब वीडियोस हैं जो प्रिंस के अपने इतने स्पेसेस में एक से एक अच्छे अच्छे स्पीकर्स को लेके आते हैं एंड काफी मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनपुट मिले और लोगों को। तो आप क्योंकि आपको बहुत जल्दी कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा और आपको कंपनीज के कॉन कॉल देखना पड़ेंगे, पुराने कॉन कॉल है, आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स देखनी होगी, कॉम्पिटिटर्स के आपको व्यू देखने होंगे, पुराने कोई इनका आपको इंटरव्यूज मिलेंगे, मैनेजमेंट ने आके क्या बोला टीवी पे, यूट्यूब पे कोई वीडियोज हैं। देयर सो मेनी थिंग्स इन, जितना आप डिग करेंगे उतना आपको इनपुट्स मिलते जाएंगे। इवन फॉर मी, और मैं तो ब्रजेश भाई एक एक बहुत अच्छा तरीका और है, अभी एक लर्निंग 11 करके शेखर भाई हैं अपने ट्विटर पे ही, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस मस्ट बी नोइंग हिम। तो ही हैज अ टेलीग्राम चैनल दैट गोज बाय द नेम रिसर्च रिपोर्ट।
तो उसमें बेसिकली वो एक बहुत अच्छे फॉर्मेट में जो ओपन टू ऑल रिपोर्ट्स हैं विच आर इन पब्लिक डोमेन, तो वो शेयर करते हैं। प्लस ऑन द टॉप ऑफ दैट कंपनीज के बारे में जो उनके रिजल्ट्स हैं, तो एक उसका छोटा सा स्निपेट्स या समरी वो शेयर करते हैं। तो बेसिस दैट मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें, बट वो रिपोर्ट्स वगैरह 1 पेजेस या 5-6 पेज की हैं, वो पढ़ के आपको एक समझ में आता है कि जो इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे रिसर्च हाउसेस के एनालिस्ट हैं वो क्या क्या देख रहे हैं, क्या गाइडेंस देख रहे हैं, क्या उसमें रिस्क आपको हाईलाइट कर रहे हैं, और गाइडेंस की लाइन में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। और बहुत बेसिक चीजें जैसे प्रोमोटर क्या कर रहा है, प्रोमोटर का स्टेक बढ़ रहा है, कम हो रहा है, प्लेज्ड है, और है तो किस बेसिस पे है, कुछ टर्न अराउंड आप स्टोरी में देख रहे हैं, तो आप उसको पढ़ के बहुत सारी चीजें उसके बारे में पता लग जाती हैं। बाकी तो यार जितना आप पढ़ोगे, जितना अच्छे लोगों को सुनोगे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां पे भी कंपाउंडिंग होती है। बाकी आई थिंक कुछ ऐसा सिस्टमेटिक वे में फंडामेंटल सीखने का मिले तो यार मुझे भी कुछ बताना, मैं आपसे क्या सीखूं। देखिए, थैंक यू सर। उसमें क्या है कि आई फॉलोड विलियम ओनील बेसिकली। सो बेसिकली ही इज टॉक अबाउट ओनली कि जो भी होता है कंपनी में वो सभी चीज़ आपकी ईपीएस में और सेल्स में और ओपीएम में दिखता है। सो इफ़ यू आर एनालाइजिंग दोज एस्पेक्ट करेक्टली, सो आपका बाकी सब कवर हो जाता है। सो मैंने सोचा कि शायद इसके अलावा कोई दूसरा होता होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ तो मैं क्या है कि टेक्निकली पैटर्न पे जाता हूँ, बेसिकली कपन हैंडल एंड ऑल दोज थिंग्स। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो होता है विनर्स वो 20 से 30% के रेंज में होते हैं। बट मैं देखा है पिछले अभी 1 साल से जो बुल रन चल रही है, उसमें देखा है कि जो स्टॉक में बेच दिया वो कम से कम बहुत सारे स्टॉक जो मेरे यहाँ पे डबल से ऊपर चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कुछ तो मिस आउट कर रहा हूँ जो मुझे समझना चाहिए, और आई थिंक उसको मर्ज करके मुझे लॉन्गर मूव भी गेन करना चाहिए एंड थोड़ा बहुत तो ये सब सीखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। थैंक यू। थैंक्स अगेन। यस, as you have something to say. Yeah, don't only look at profit and loss account, that is sales growth, EPS growth, gross profit margin. Also look at balance sheet, that's very important. Because if you find that inventories and receivables are very high, or there is addition to fixed assets without consummate addition to sales. If your fixed assets are going up but your sales are not increasing, or debtors are receivables are going up, or inventories are going up, those are all first danger signs that things are not okay. That people are padding their P&L account, and the all it invariably shows in these three figures. So when you look at your sales, if your sales has gone up by 100% and your inventories have gone up by 100%, that's fine. But if your sales have gone up by 5%, your inventories have gone up by 200%, that means you're not selling what you're producing. Yeah, that's a good point. Yeah. Thanks. So next in line is Naren. So Naren, you can quickly unmute and ask your question. Hello, am Yes, I audible? Naren, go ahead, please. Yeah, I was just on the same question which Cyrus sir has also mentioned in last comment, that what is the overlook of the chemical industry in coming few years, because entire market is running in bull run, but some stocks like DCW, GHCL, Tata Chemical, we are not able to see that spark in these particular stocks. Second question is that what's the outlook of IT industry, as there is a growth in profit and sales, but the number of employees are getting reduced, particularly in TCS and Infosys. So what's their outlook? So Naren, like we recently had a session on both the sectors, be it chemical and IT. So for IT sector, we had the session with Ameya, and on chemicals, we had multiple speakers. So after this spaces, definitely you can get a hand at those session that will really help you. Broadly, like when it comes to chemicals, so
basis what our speakers had said in the session. So the sector looks promising from here, but you should not be like expecting the kind of move which they gave from in the last 2 years before this correction of 1.5 year. So definitely all the pockets are looking good from here, but as we always say, you have to be very selective with the companies which you understand, and especially you should be looking at the demand supply equation basis that which you can, I mean, you can make your investment decisions. So those sessions can surely help you. And IT का अगर अमेया भाई अभी थोड़ी देर में free होंगे तो I'll take that question again with him. But again, he has very clearly articulated what's happening in the sector. So definitely that could be a great value addition for you. And specifically you named few companies. तो यार companies का देखो बात करना ठीक नहीं है, because although जो आपने नाम लिए उनको हमने पढ़ा भी नहीं है, तो no individual views. But again, if Cyrus ji has something to add, तो definitely he can. No, sir, I don't have anything to add. I just wanted to know where can I hear these spaces that you are referring to about IT and chemicals? If I go to your page, it will be there. सर आपने अच्छा दिया, मुझे थोड़ा मौका दे दिया अपने आप को मार्केट करने का. चलो जोक्स अपार्ट, सेम नाम से एक्सीडेंटल इन्वेस्टर प्रिंस एक यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं Okay. सारे सेशन अपलोड करता हूँ. तो इफ Thank यू you, thank you, thank you. सिंपली गो टू यूट्यूब एंड सर्च बाय Yeah. एक्सीडेंटल इन्वेस्टर प्रिंस, तो आपको Okay. Thank you. 200 प्लस सेशन मिलेंगे. उसमें आपको फार्मा, हेल्थ केयर, केमिकल्स, Oh, very good. Thank you. banking, metals, cyclicals, personal finance, mutual fund, technicals, swing trading. I mean, Oh, Bapre. बहुत बहुत सारा अच्छा कंटेंट है. Oh, very good. Thank you इसलिए very नहीं much. क्योंकि मेरा चैनल है, but the quality of guest I had hosted, I am proud of that, and definitely it's a great value addition. और IT में अमिया भाई के बहुत सारे सेक्टर स्पेसिफिक सेशंस हैं, तो पीछे से आप लोग देख सकते हैं. तो that is indeed a good place to look out. Thank you. So next in line is Mr. Jay. Jay, you can unmute and ask your question. नमस्ते सबको. सर, मुझे एक क्वेश्चन था. फॉर एंट्री एंड एग्जिट, स्पेशली फॉर स्मॉल, माइक्रो एंड एसएमई स्टॉक्स इन टेक्निकल चार्ट, which key indicators need to be keep in mind? यार अभी वो स्पीकर से हटा दिए भाई साहब, स्टॉक मार्केट साइंटिस्ट, वो इस पे हेल्प कर पाते हैं. टेक्निकल्स का तो जय यार लिमिटेड नॉलेज है, बट अगेन ब्रजेश जी, साइरस जी, अगर आप गलती से टेक्निकल्स देखते हैं तो शायद आप जय को हेल्प कर पाए. See, in small cap and micro cap, the volumes are very erratic and the volatility is very high. So it's very difficult to go on the basis of technical analysis for this, because one day it may go for 15 days on upper circuit, or it may go on 15 days for lower circuit, and this upper circuit, lower circuit is driven by news events and volumes which are very small. So all this has a disproportionate. It's not like Hindustan Lever, where there are millions of sellers and millions of buyers, and everything is all news is freely disseminated to public. So Okay, sir. I will Thank you. add to this answer actually. For technical upfront, see, whenever I prefer mostly a stock which are having less than 5,000 free float. Okay, so basically it's game of demand and supply. So you have to read the demand and supply on the chart, and there is no indicator that going to help. Only I take the help of moving average, that 10 weekly moving average. So once you find that there is a supply of shares, I mean the price should be in uptrend. Very, I mean the 200 DEMA
should be 6 months uptrending, and then price is consolidating near 50 DMA with volume is contracting. Then after that breakout, you can take it with around 5 to 8% stop loss, and you can ride the momentum. Ensure that your market free float is less than 5,000 crores. So you can get around in 3 to 4 weeks, you can get easily 20 to 30%. So this is what I am following since last 2 years, and you can generate around 30 to 40% kagar. So this is what I will say for technical upfront. Thanks. Okay, sir. Thank you. I am not a technical specialist. Do all Thanks my for your investments. input. So last speaker we will take is Pra. Thanks, Prince. Any view on oil and gas sector, considering some of the healthy dividend-paying PSU companies still available at single-digit PE? यार देखो मेरा तो इंडिविजुअल व्यू नहीं है बट टेलिंग फ्रॉम माय सर्कल और नेटवर्क यू कैन से दे आर लाइक पॉजिटिव अबाउट द सेगमेंट्स यू आर टॉकिंग और उनको लग रहा है लाइक बेसिस ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन एज वेल एज डिविडेंड these shall do good. So this is my limited summation on that. So if any additional summation on Brajesh's and Cyrus's part, so definitely they can add to that. एक्चुअली ऑयल एंड गैस में जो सबको लग रहा है और जो है ये पर्टिकुलर सेक्टर इट इज बीन गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट सो देयर इज whole thing is goes into the hand of government. And looking to the incoming election, ensuing elections, anything can happen overnight. So the dividend is not a certainty there that you will get the dividend regularly. And if suddenly anything happens and all these global wars are going on, if the crude all of a sudden say increases by 20, 30%, 50%, then who will bear this cost? So these oil companies are not that you will definitely you will get the dividends on a definitive basis. So I will avoid this particular sector due to this reason because there is no clarity there. So as of Right. now, till now, from last 2 years, government backed the oil companies very well. But in the future, whether they will back them or not, it's a very big question. And for everybody's benefit, like Mr. JG's Techno has shared the link to my YouTube channel, which I have pinned to this spaces. तो जो स्पेस के ऊपर मैंने ट्वीट पिन कर रखा है उसमें लिंक दिया हुआ यूट्यूब चैनल का तो मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब और all the sessions which I was discussing about so definitely you'll find those session 213 के आसपास sessions and when I'll upload this it will be a 214th session so बहुत सारे sessions framework के ऊपर हैं तो definitely they can help you big time on that front and sectoral भी बहुत सारे हैं swing trading technical basis भी बहुत हैं mutual fund पे भी है personal finance पे भी है और थोड़े डाइवर्स टॉपिक जैसे बहुत अच्छी जो बुक्स हैं बुक्स से रिलेटेड भी हैं केमिकल्स फार्मा हेल्थ केयर पे तो बहुत सारे सेशंस हैं तो इवन ऑन बैंक्स इंश्योरेंस तो मैं बता रहा हूँ मतलब वट एवर यू कैन थिंक इन योर माइंड तो देर आर हाई चांसेस दैट यू विल फाइंड अ वीडियो रिलेटेड टू दैट so please do subscribe and also you can share with your friends and family so that they can also have access to that. I think Ameya bhai koi issue aa raha hai like I have sent you the request and I cannot see request from your end. So just try once otherwise we can surely have your thoughts sometime around. चलो एक लास्ट स्पीकर है राज इनका सुन लेते हैं उसके बाद फिर देखते हैं some issue maybe I think some glitch on Twitter's part not sure. So guys wonderful session. Okay, we got Ameya bhai. So Ameya bhai welcome again. Can you hear me? Yes, I can. So, Ameya, Okay, two sorry. quick questions. Seems to sound good. Right. So, two quick questions. Although the amount of the I mean
which is sold by the FIIs is not very sizable, but in January first 2 weeks, IT sector has been sold by the FIIs. So that is one. And on the top of that, अभी एक भाई थे, शायद वो क्वेश्चन आपने सुना होगा. So he was asking about IT sector, although I had told him about our session, but again few pointers around that. की broad view आपका क्या है? Okay. So to be very honest, I didn't see this FII data until you sent me. So उसके पहले मैंने देखा नहीं था. I don't really track all these things कि sectoral FIIs का allocation कैसे change हो रहा है and all that stuff. Like we have been discussing on this topic since long time. I believe that IT में positioning is the only key thing that matters. And if you're able to sense that a company is, positioning itself, let's say for a couple of years ahead in time, probably एक दो साल वो perform नहीं करेगी, but उसके बाद में it will cover up, right? So you saw how Newgen perform, for example. Similar to that, there are certain companies that are, that fit that particular description. So to be very honest, ये जो large cap IT है, they are struggling on various different fronts, right? For example, TCS में recently management transition हुआ है, Infosys में भी they have a lot of executive level folks leaving and joining other competitors. और आप अगर देखोगे इन जनरल तो ये सब जो टॉप 5-6 players हैं, everybody is still talking about the cost optimization, cost takeout deals, margin optimization, and all these kind of things, right? So uh, I would say that ये large cap की तरफ देखने का कोई point नहीं है as of now. And it was never there. I mean, we have been speaking about IT for quite a long time, and I am always of the view that positioning समझो कंपनी का, अगर positioning सही है market में, तो eventually premium उसको मिल जाता है. तो वैसे वैसे प्लेस हैं, अभी भी हैं. ऐसा नहीं है कि यू डोंट फाइंड सच प्लेस करंटली इन द मार्केट. कुछ बहुत छोटे हैं. So that's why doing the due diligence and speaking with the promoters very frequently, understanding what they are thinking, how they are able to change the direction. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटा कंपनी होता है बहुत, that promoter knows how to do their business, but they are probably not able to bring that into alignment with what market expects from them, right? So वहाँ पे जो anchor investors है, they और कोई अगर बड़ा investor involved है, तो they have to kind of do the hand holding for the promoters and tell them, यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा फोकस करोगे तो बेहतर होगा, and so on and so forth. So ऐसे ऐसा ये सब चीजें आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है. But there are still plays where you have a nice positioning available. हम लोगों ने बहुत पहले, जब ये जीपीयू वगैरह का बात भी नहीं हुआ था, यूर वर द फर्स्ट फेज जहाँ पे हम लोगों ने जीपीयू कंप्यूट के बारे में बात किया था. आई थिंक 9 months ago, 7 or 8 months ago, I believe. And now you see everywhere, everybody's just going gung ho after all these GPU companies, and Nvidia भी stock भी all time high पे है. Similar positioning कुछ और कंपनीज में है, जैसे आप अगर देखोगे ताल एंटरप्राइजेस है, ऑनवर्ड है. ऑनवर्ड में the the problem in these companies is you cannot really assess these companies quarter on quarter, because specifically in case of onward, ये लोगों का डोमेस्टिक फेसिंग से इंटरनेशनल फेसिंग में बिजनेस गया है, सो वो ट्रांजिशन में है अभी भी. सो I would not look at them quarter on quarter, but year on year. The bet is on the jockey again, right? So similar case is there in Sonata. They're climbing up in value chain. जो पहले सिर्फ पेमेंट स्पेस में फाइनेंशियल BFSI में थे, now they are doing some niche work with Microsoft. न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोगों ने बात किया था, where I see lot of price hikes coming up. So ऐसे specific thesis अगर हम लोग play करेंगे तो there are still really good opportunities to play. And again, it's up to each individual, जिसको जो sector समझ में आता है वहाँ पे it's relatively easy to identify these opportunities and actually play. Uh, then technology space में there are some IPOs that are coming in, और कुछ unlisted space में कुछ companies है जो मैं फिलहाल देख रहा हूँ. बट अदर देन दैट आप अगर देखोगे तो ये जो स्पेस है, कार्गो, पैसेंजर सॉल्यूशंस, एयरलाइन, ER&D, ये स्पेंड काफी स्ट्रांग है कंपेयर टू IT स्पेंड. सो
That's why you see, I was very positively surprised when LTS announced that they were able to win that mega deal with SWC. I was expecting कि इन लोगों का margin compression आएगा, but actually वो हुआ नहीं. So likewise, there are many such specific pockets which you can play selectively. It's again a stock pickers market यार. कोई भी sector ले लो. Um, तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज का कमी नहीं है अगर आप देख सकते हो कि कौन सी कंपनी का पोजीशनिंग कैसा है. आई होप आई हैव कवर्ड व्हाट यू आर आस्किंग. Great, Ameya. So, Ameya, although we had discussed, but again, barring this technology and IT thing, anything basis technical or maybe your study, any other pockets which you think, as we always say, opportunities are always available. So, anything more on सर वो that, like? पॉकेट जो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था. इट्स जस्ट लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट दो स्टॉक्स, बट अगेन उसमें मुझे कोई फंडामेंटली बिजनेस या सेक्टर के बारे में कुछ पता नहीं. इट्स जस्ट दैट हैव प्लेड लाइक 2-3 साइकिल्स विद दो स्टॉक्स एंड एंडेड अप नॉट मेकिंग मनी, or if I made money, I ended up giving all the money back to market, right? Especially like we talked about Sila and we talked about Chennai Petro. हम दिल्ली में मिले थे तो we also talked about dredging corporation, if you remember. तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं पिछले लाइक 15-17 साल से देखते आ रहा हूँ, उनको छोटा मोटा ट्रेड करते आ रहा हूँ. कभी उसमें पैसा बना बट वो रुक नहीं पाया. आई एंडेड अप गिविंग दैट मनी बैक. सो आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि ये कुछ पर्टिकुलर साइकिल में ये स्टॉक्स मूव होते हैं. तो आई स्टार्टेड टेकिंग पोजीशंस इन दिस स्टॉक. सो अदर देन आईटी एंड टेक्नोलॉजी, थोड़ा बहुत मेरा इन्वेस्टमेंट अभी ये थ्रू अनलिस्टेड कंपनीज एंड ऑल दैट सोलर एंड ईपीसी कंपनीज में है. अदर देन दैट, Chennai Petro, Sealand, and Dredging Corporation are the three kind of completely different sectoral companies which I hold with purely on the basis of technical setup and the underlying cycle through which these stocks have gone through over past, let's say, 18-20 years. स्पेशली चेन्नई पेट्रो का और सीलन का अगर देखूं तो मैंने पिछले 18 साल का साइकिल खुद लाइव देखा है मार्केट में. सो वो थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव से मैं इन स्टॉक्स को देखता हूँ. बट उसके अलावा टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट हैव एनीथिंग टू ऐड ऑन दैट. रिसेंटली आप अगर देखोगे तो कमिंग बैक टू टेक्नोलॉजी अगेन, ओएफएसएस ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया. फाइनली इट वाज लाइक कंप्लीटली स्लम्बर में से आउट ऑफ द, किसी ने उसको ऐसे झंझोड़ के जगा दिया और टाइप्स रिजल्ट है वो. सो आई एम वेरी कीन टू लिसन टू व्हाट मैनेजमेंट हैज टू से, because this can be potentially a tipping point that everybody was waiting for. OFSS में हर किसी को पता था कि the only problem in OFSS was the lethargic management, to be very honest with you. In at top level में जो लोग बंदे बैठे हैं, they were primarily after the dividend and all that, right? So कोई innovation का scope नहीं था. कई बार उसमें delisting के भी attempt हो चुके थे. बट अगर कुछ यहाँ पे genuinely change हुआ है तो that is something I'm really keen to understand. So that is also an interesting play to actually look at. Great, So thanks. And for our audience, these stock has run up quite a while, so please basis the names only, do not jump in. This is so as to illustrate that what he is looking at the market at current point in time. So by no means any buy, sell, or hold on that. So Ameya, anything more to add before we close? Actually, very short on the battery. It's 2-3%, so it can no, no, crash no, anytime. no, no, no. No, Prince, nothing at all. So lovely hearing you, and especially coming on short notice, despite having Likewise, a Prince. busy Always a schedule. pleasure. Always a pleasure having you here. So It's just thank that I you, started in a everyone. new role, so it's a little difficult to spare time, but let's see. But thank you for inviting me. Weekends are always good, so these random spaces are more enriching in addition to the regular sessions. So thanks everyone for joining, Thank and you. do not forget to subscribe to the channel, and definitely you'll thank me later. And we are in a sweet spot, so 5-10 years down the line you'll be thanking that एक friends का channel हुआ करता था जिसे सुन के हमने अपनी process को refine किया. So I'll feel happy you all make money. और देखो यार, नाम के लिए यहाँ spaces में मत आओ. नाम बताने का पर्पस अगर होता है तो वो illustration पर्पस है.
You should not be acting on those names simply by listening कि कोई बोल रहा है तो, because you never know कि कब उसमें changes आ जाएं और he or she changes his mind, वो आपको पता लगे ना पता लगे. So please be very very cautious on that front, or always own your decisions. Do not simply get swayed by the ideas of other. हाँ, educational point of view से आप definitely ले सकते हैं, but the due diligence on your part is always warranted. So with that note, I thank everyone for joining us on Saturday evening. Thank you so much. Keep supporting, and any feedback and questions are more than welcome. My DM is open, and you can also tag tweet if you have any issues. So definitely try to help you guys on that. So whosoever joined and added value as a speaker, thanks to them also. Lovely talking to everyone.